Hi all, welcome back to the new video. So I think I'm last video रे CSS रो comments विषय कथा हेतले जे types of comments कोन comment आमे काहेकि यूज करबा दरकार and comment आमे बहुत अधिका यूज कले कोन प्रॉब्लम होबो आई थिंक आमे से सबू रो डिस्कशन करि सारथिले ऑलरेडी. सो CSS रो एरर्स विषय आज आमे कथा हबा ठीक अछि. तो ता पूर्वर मते टिके आको जूम कर देवा को दियो ताकि टेक्स्ट गुड़ाक टिके प्रॉपर्ली विजिबल हम कहीं बहुत छोट देखा जाउची टेक्स्ट गुड़ाक ठीक अच्छे. सो CSS एरर्स विषय में आज कथा बा. एरर्स इन CSS कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और स्टाइल not being applied correctly. This page shows common CSS mistakes and how to avoid them. तो बेसिकली CSS रो जदि एरर्स आमे कहि परिबा कोन इंपैक्ट रखे. सो बेसिकली से कोन करे ना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करे किंबा आमे जहाँ भी स्टाइल आमे दउथिबा सेटा प्रॉपर्ली अप्लाई हुएनी. एटा तो कॉमन रीजन मु कहि परिबी कहिना बहुत ही केसेस रे कोन हुए ना CSS रो जदि किछि भी सिंटैक्स एरर थिबो और समथिंग आमे किछि मिस कर जाउथिबा तो कोन हबो ना से स्टाइलटा अप्लाई होनथिबो. तो आपण माने अगेन एंड अगेन कोन करथुबे ना ट्राई करथुबे जे कोन पई अप्लाई होनी बिकॉज सम एरर वुड बी देयर. सो से एरर पई कि प्रॉपर्ली स्टाइलटा हमरो अप्लाई होनथिबो. ओके. सो आमे देखिबा कोन कोन जिंस आमे बेसिकली मिस करे एंड आमे ट्राई करिबा से सब बेसिक जिंस गुडा को केमती अवॉइड करिया पई ठीक अछि. बेसिक एरर्स मु कहि परिबी. So missing semicolon. So forgetting a semicolon at the end of a property declaration can break the style rule. Okay. So आमे simply गोटे जिनस आमे मिस्टेक करबा आई थिंक बहुत टाइम रे कोन हबो ना जेतले आमे किछु जिनस को आमे डिक्लेयर करूचे इन CSS आमे सेतले सेमिकोलन को भूली जाऊ. सेमिकोलन को आमे ऐड करिया को भूली जाऊ. सो सेटा गोटे बेसिक एरर हे परिबो बिकॉज किछि टाइम रे किछि भी देखाउ तो नीट एंड क्लीन अच्छी कोड सब किछि करेक्ट अच्छी बट कहीं अप्लाई होनी बिकॉज आमे सेमिकोलन को मिस आउट कर जाय छे ठीक अछि. सो मो कहबा कथा हैला vividly check करंतु जेतले भी कोड लेखुचंदी एंड सेमिकोलन को मिस कले समटाइम्स इट वर्क एज अ a weird behavior से देखाए. सो सो बेले ध्यान रखिथिबे जे सेमिकोलन वुड बी देयर जेतले आमे गोटे प्रॉपर्टी को डिक्लेरेशन कोचे एट द एंड ऑफ द प्रॉपर्टी देयर वुड बी अ सेमिकोलन ठीक अछि. देन इनवैलिड प्रॉपर्टी नेम्स जदि प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्ली आमे लेखु नथिबा मे बी आमे जोटा लेखुथिबा आमको लागुथिबो जे हाँ ठीक अछि बट सेई टाइप रो किछि एग्जिस्ट करू नथिबो प्रॉपर्टी नेम. सो प्रॉपर्टी नेम केतेबेले इनवैलिड हे जाय सेथि पई भी अप्लाई हुएनी. जेमति कि देखो एठी यार एग्जांपल दे देछंदी कलर. कलर रे एग्जांपल कोन COLOR. समटाइम्स आमे मु जेतेले स्टार्टिंग रे कोड लेखुथिली CSS रे COLOUR लिखि दउथिली. तो सेति पई कि बहुत टाइम रे मते बहुत टाइम स्पेंड करिया को पड़ची जे सब तो ठीक अछि पुनी कोन पई अप्लाई होनी आ परे जणा पड़े कि अच्छा कलर स्पेलिंग एम्ति होबनी COLOR सिंपल हबो. और समटाइम्स एटा भी हेछि मो सहित COLR लिखि देथिबा किछि गोटे पर्टिकुलर टेक्स्ट गोटे मिस कर जाइथिबा बट हमको जाना पड़थियो कि हाँ कोड पूरा नीट एंड क्लीन अछि एंड सब ठीक अछि ठीक अछि. सो बी कूल एंड काम जेतेले माने कोड करछो किबा किछि गोटे एरर होउची टेक सम टाइम टिके माइंड को रिलैक्स करके देखो एंड आई होप तमन को जाना पड़ जबो कोन एरर अछि. बेसी स्ट्रेस नेले किछि देखा जेनी सब लागिवो हाँ सब तो ठीक अछि आ. ओके लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इनवैलिड वैल्यूज. समटाइम्स आमे प्रॉपर्टी करेक्ट थाए बट जेमति कि प्रॉपर्टी नेम मु कहली प्रॉपर्टी नेम करेक्ट थिबो बट तारो वैल्यू जहाँ भी आमे प्रोवाइड करथुबा सेटा मिस्टेक थिबो. जेमति कि देखो width -10 पिक्सेल. ओके मे बी समटाइम्स एटा इग्नोर हे जिवो. एंड इफ यू फॉरगेट टू क्लोज अ ब्रेस दैट मीन्स बेले बेले कौन हुए ब्रेसेस गुड़ा को क्लोज करिया को हम भूली जाओ. सो द एंटायर रूल मे बी इग्नोर्ड. समटाइम्स इट वुड वर्क और इट वुड बी इग्नोर्ड. ओके एंड एक्स्ट्रा कॉलन्स ऑफ ब्रासेस केतेबेले केतेबेले एमती एक्स्ट्रा कॉलन लागि जाइथिबो. ओके दीज आर बेसिक थिंग्स आई थिंक से माने पूरा एनालिसिस करके ही ए जिंस गुड़ा को प्रॉपर्ली मेंशन करछंती बिकॉज दीज आर द थिंग हमें मिस करि जाऊ केतेबेले जे हमको लागिबो हाँ हमर कोड पूरा ठीक अछि आ देखला को अप्लाई होनथबो प्रॉपर्ली एंड हमें बहुत ही टेंशन हे जाऊ. सो डोंट बी वरी फॉर दैट. टेक योर टाइम गो स्लोली बी काम डाउन. ओके देन प्रॉपर्ली तमे देखो जे कौन एरर अच्छी एंड एरर रू ही हमको बहुत जिन शिक्षा को मिले बिकॉज
सेई एरर जहाँ आम सहित होइथिबो मे बी सेटा फर्दर हमको आमे क्वेश्चन भी पाई पारू कोठी और एल्स आमे सेई जिंसटा यू नो नेक्स्ट टाइम घटिला बेलू आमे जानी पारू कि अच्छा एई पर्टिकुलर एररटा मो सहित पूर्वरु हेतला एंड मु ताको केमती रिजॉल्व करथिली सेम पैटर्न आमे फॉलो करके जिबा ठीक अछि टिप्स टू अवॉइड सीएसएस एरर्स जेमती कि मु कहली यूज अ कोड एडिटर विथ सिंटैक्स हाइलाइटिंग जेमती कि आमे ब्यूटीफायर यूज करछे हाँ कि नहीं बिकॉज तार ब्रासेस गुड़ाक सब डिफरेंट डिफरेंट कलर रे आसीजिव सो से से हमको माने एठी कोन लिखा है पॉइंट जे पर्टिकुलर गोटे कोड एडिटर आमे यूज करि परिबा जो थरे कि सिंटैक्स गुड़ाक हाइलाइट हेकि रहउतबो हाइलाइट इन द सेंस डिफरेंट कलर रे ऑब्वियसली गोटे कलर मिसले हमें धरी पकेबा कि अच्छा ए पर्टिकुलर कलरटा मिस अछि और ए ब्रासेसटा मिस अछि हमको जणा पड़जिवो वैलिडेट योर सीएसएस विथ अ सीएसएस लिंटर और वैलिडेटर सीएसएस को आमे वैलिडेट करिया पई आमे वैलिडेटर रो यूज करि परिबा एंड राइट ए सीएसएस इन स्मॉल सेक्शन एंड टेस्ट फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे सेक्शन रे आमे सीएसएस को लेखिबा एंड ताको टेस्ट करिबा प्रॉपर्ली बिकॉज़ वी आर बिगिनर्स आमे माने पूरा प्रो नुहे जे हां संग संग देखि कि जान दवा अच्छा एटा मिस्टेक अछि सो वी आर नॉट दैट मच ऑफ प्रो सेति पई टिके टाइम लागिबो बट वी कुड बी ओके नेक्स्ट टॉपिक को आमे जिबा let me go to the next concept okay these are like css callers okay so css caller in css caller are specified using a predefined caller name with a rgb hex hsl rgba hsla value okay तो css caller आमे add करि परिबा by using a predefined color name जेमति कि एटा होची टोमेटो कलर ऑरेंज कलर किंतु देखिले कोन लागुथिबा अच्छा टोमेटो गोटे परिबा नारे भी कलर अछि ना ओके अच्छी ओके डगर ब्लू मीडियम सी ग्रीन कितने तरह सब स्टाइलिश ना ग्रे स्लेट ब्लू वायलेट लेट ग्रे these are all predefined names okay CSS or HTML support 140 standard color names. So CSS और HTML basically support करंती कोन 140 टा पाखापाखी रो standard color name. Yeah, it's a big number on the basis of color because आमे केवल 7-8 टा एभले कलर को धरिकी सबले बसे isn't it? But this is not the case. 140 टा 140 standard colors are there. CSS background color, you can set the background color for HTML element as well. See here, this is the you know h1 tag or something रे हमें h1 रे हमें लिखिचे hello world ताको हमें गोटे कलर दे परिबा तार बैकग्राउंड कलर हमें दे परिबा एंड नेक्स्ट जहाँ भी हमरो पैराग्राफ पी टैग भितरे जहाँ भी लिखिचे और प्री टैग भितरे जहाँ भी हमें कॉन्सेप्ट लिखिचे तार बैकग्राउंड रे भी हमें किछि कलर अप्लाई करि परिबा दैट इज बैकग्राउंड कलर see here like h1 style background color colon ame diche dogger blue hello world then p tag रे ame style लिखिचे style equal to double quote भितरे background color tomato तमे किछि भी कलर नै पारिबो ओके then css text color सेटा थिला background color this is the text color तमे background and text color को different different देई पारिबो तमो इच्छा ओके तुमको केही किछि कहिबे नाही CSS border color border रो भी color देई होची देखो छ you can set the color of borders also border text background color तम इच्छा रे तमे देई पारिबो ठीक अछि CSS color values in CSS colors can also be specified using RGB values hex values HSL values RGBA values and HSLA values ता माने कोन कहूची आइदर तमे डायरेक्टली नेम नहीं पारिबो कलर रो नेम नहीं पारिबो किंबा तमे याको एई फॉर्मेट रे भी लिखि पारिबो RGB 255 फॉर रेड 99 फॉर अच्छा RGB रो फुल फॉर्म कोन रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन और ब्लू रो कॉम्बिनेशन रे हमें किछि कलर को डेवलप करि पारिबा ओके देखो सेम कलर एडा रो अछि हैश FF6347 अछि याको हमें RGB रे भी सेम हमें याको प्रेजेंट करि पारिबा जेमति कि रेड दरकार 255 ग्रीन दरकार 99 एंड ब्लू दरकार 71 सो दैट हमें एग्जैक्ट कलर टा गेट करि पारिबा ठीक अछि सेम HSL पैटर्न रे भी हमें करि पारिबा जेमति कि 9 100% and 64% okay
याको ट्रांसपेरेंट भी करी हबो same as color name tomato but 50% transparent. That means we are providing this saturation value something 0.5. ओके से कौन करिबो ट्रांसपेरेंट करिबो टिके माने पूरा डार्क रहइबनी एटा देखो यार यार ए दिटारो डिफरेंस देखो फर्स्ट एंड सेकंड कलर रो डिफरेंस देखो ठीक अछि फर्स्ट पूरा डार्क अछि सेकंड टा ट्रांसपेरेंट अछि ओके सो आमे जेते आगो को जिबा आउरी पढ़ी पढ़ी चलिबा कि आरजीबी रो डिफरेंट कलर एंड आमे जेतेले फ्रिक्वेंटली गुडा को यूज करबा सेतेला मो बेसी टिके बुझी परिबा कि अच्छा आरजीबी कोठी आमे यूज करबा हेक्स आमे कोठी यूज करबा एचएसएल आमे कोठी यूज करबा बहुत सारा चैप्टर एमती आगरे अछि सो विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर ओके till then take care bye bye keep watching the videos okay go for practice just you just go just do practice again and again and से पूरा प्रो हो जाओ ठीक अच्छे किसी भी डाउट हेले प्लीज लेट मी नो मु मोर जेतिकी पारिबी डेफिनेटली मु हेल्प करिबी ठीक अच्छे till then take care bye